नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज पुणी आउ गोटे सेशन रे आमे देखिबा डायबिटीज नर्सिंग ऊपर एमसीक्यू विषय सॉल्व करबा। डायबिटीज गोटे इमिडिया डिजीज जोडा कि हमें जेनेटिकल मध्ये हेई पारे आ हमर लाइफस्टाइल चेंज को मध्ये हमर देखा जाई पारे आउ ए जगह रे हमर जो जेनेटिक चेंज पई बोली जो होची सेही जिंसटा हमर इनहेरिटेबल हे जाउची आ जोटा हमर लाइफस्टाइल चेंज पई बोली होची सेटा टू सम एक्सटेंट हमर रिवर्सेबल मध्ये हेई परिबो। ता ऊपर आमे किमिति रिवर्स करि परिबा किमिति आमे ट्रीटमेंट करबा कोन कॉज जकु हमर डायबिटीज होची आ केते प्रकार डायबिटीज अछि से सब क्वेश्चंस को नै गिरी से सब टॉपिक्स को नै गिरी आज रो सेशन रहइबो डायबिटीज नर्सिंग ऊपर। तो मेक श्योर तम मानकर जेमिति एक्टिव पार्टिसिपेशन रहइबो एठी आउ क्वेश्चन रो आंसर मते तमे एक्टिवली करिवो। ठीक अछि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस previous कोटे सेशन ऑलरेडी सॉरी गलानी दिस इज अनदर सेशन फॉर द डे आउ एबे इमिति हमर एक्टिव पार्टिसिपेशन सहित अधिक रो अधिक सेशंस करी अधिक रो अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिया हमर फोकस रहबा दरकार जहा द्वारा कि तम मानकर बहुत ही शीघ्र एग्जाम हेबा पई बोली जाउची आउ जस्ट एक्जेक्टली 1 मंथ आज हे गला 22 तारीख 22 अगस्त 22 अगस्त रे तम मानकर एग्जाम रो नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हे गलानी। तो सेहिति पई बोली प्रिपरेशन रे आउ जम्मार भी देरी करनी ए 1 मंथ होची तम मानकर पई बोली बहुत ही क्वेश्चन। तो ए 1 मंथ भीतर तमे माने जदी फुल सिलेबस हमर जो जहां भी सब क्वेश्चंस वगैरह हे गला कंटेंट हे गला थ्योरी हे गला से सब को जदी तमे माने से जिनसटा को तमे से जो बेनिफिट ता पाइबा पई बोली चाहउछ ताले आज दिन का पई बोली विद्यासागर क्लासेस तरफ रो जो नर्सिंग ऑफिसर रो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच रहिची से ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच रे ह्यूज डिस्काउंट अछि। ह्यूज डिस्काउंट कोन रहिला जो माने मध्ये ऑनलाइन रे एनरोल हेबा पई बोली चाहउछंती जो माने ऑनलाइन रे पढिबा पई बोली चाहउछंती सेमानक पई बोली प्राइस ता हे जाउची 999 जोटा कि प्रीवियसली थिला 1499 सेडा एबे कटिकिरी हमरो 999 हे जाईची प्राइस ता आउ ऑफलाइन रे प्राइस ता हमरो 2999 हे जाईची जोटा कि प्रीवियसली हमरो 5999 थिला हैना 5999 थिला। तो this is being a very helpful for very helpful discount offer for you mega discount offer चलीची जमार भी मिस करबनी चांस को जल्दी रो जल्दी एनरोल हो जाओ हैना। चलो एबे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करबा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 a patient with type 1 diabetes mellitus is found unconscious sweating profusely and has a blood glucose level of 42 mg per dl. Which intervention is the priority of IV access is immediately available? Administer regular insulin, administer IV dextrose, administer sodium bicarbonate, restrict the carbohydrate intake. कौन करा जिवो ए केस रे? Yes. Good morning everyone. हाँ, Lakshmi, Pratima. It is B. We need to administer the IV dextrose. We need to administer the IV dextrose. Next question also, question number 2. A patient with diabetes mellitus is receiving insulin therapy. Which insulin has the most rapid onset of action? Regular insulin, NPH insulin, insulin glargine, glargine, insulin lispro. Insulin lispro. Yes. Question number 2. It is insulin lispro. एटा गोटे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दा जोटा कि हमर 15 मिनिट्स भीतर काम करिवो 15 मिनिट्स भीतर काम करिवो हैला। आ गोटे अछि हमर जो रेगुलर इंसुलिन हैला रेगुलर इंसुलिन एटा गोटे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ता जोटा कि हमर 30 टू 60 मिनिट्स भीतर काम करिवो। एनपीएच इंसुलिन जोटा सेटा होछि हमर गोटे इमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन for 1 to 2 hours आ एपटे हमर रहिला कोन ना इंसुलिन ग्लाग्रीन हैला एडा होछि गोटे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पीक नाही लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नो पीक तो ये हमर 1 to 2 hours 1 to 2 hours हैला।
ठीक अछि यस डी हे जबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आसो एबे 3 हे गला क्वेश्चन नंबर 2 हे गला 3 आसो ए पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA has a serum potassium of 3.0 mq per liter before the insulin therapy. Which action is most appropriate? Start insulin immediately without correction, administer the sodium bicarbonate routinely, replace the potassium before initiating the insulin, restrict the potassium intake. Restrict the potassium intake. इंसुलिन कौन करे ना इंसुलिन आमर पोटासियम लेवल को आउरी कमे दे परिबो हैला इंसुलिन पोटासियम लेवल को आउरी कमे दे परिबो तो सेति पई बोली व्हाट वी कैन डू इज इंसुलिन लेवल जदी कमुची ताहले हमर पोटासियम लेवल मते से जगह रे कमिबो नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल 3.5 टू 5.0 थिला हैला जदी हमर ए जगह रे पोटासियम ऑलरेडी क्रिटिकली लो अछि ताहले हमको जल्दी रे जल्दी पोटासियम देबा कथा हैला जल्दी रे जल्दी आगे पोटासियम देबा कथा काहेकि ना इंसुलिन रो इफेक्ट ता हमर पोटासियम ऊपर बहुत ही हाईली वे रे रेगुलेट करूची हैला सो वी नीड टू रिप्लेस द पोटासियम बिफोर इनिशिएटिंग द इंसुलिन सी हे जबो करेक्ट आंसर यस निहारिका प्रीति प्रार्थना वर्षु रीता यस next question answer question number 4 which clinical finding most strongly differentiate the diabetic ketoacidosis from the hyperosmolar hyperglycemic state HHS severe dehydration hyperglycemia altered level of consciousness significant ketoacidosis significant ketoacidosis. Question number 4. Question number 4. It is significant hyperglycemic state already पळी गलानी हैला तो एडी हमर कीटोन बॉडीज रो निहाती देखा जिवो significant ketoacidosis will be the correct answer. Question number 5. A patient with PKA is receiving IV insulin. Which laboratory parameter requires particularly close monitoring because insulin therapy can rapidly shift it intracellularly? Sodium, potassium, calcium, phosphate. कौन होची इंसुलिन हमर कौन करची इंसुलिन drives the potassium from extracellular space to the cells तो ए जो शिफ्ट जो हमर देखा जाउची एडा हमर ब्लड रे पोटेशियम लेवल को सिग्निफिकेंटली लो कर दबो ब्लड रे पोटेशियम लेवल को सिग्निफिकेंटली लो कर दबो जोटा कि हमर हाइपोकैलेमिया स्टेट को जीव हेरी एंड हाइपोकैलेमिया स्टेट को गला बोली कहले सी हमर कार्डियक एरिथमिया कॉज करबो आ पर्टिकुलरली हमर कार्डियक प्रॉब्लम सब हमर ता सहित सब एसोसिएटेड हेगिरी आसीबा आरंभ हे जिवो ठीक अछि जोटा कि हमर पोटेशियम लेवल ता बहुत ही हाईली वे रे रेगुलेट करछि बोली कहउछि यस वर्षो प्रार्थना निहारिका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 which assessment finding is most characteristic of diabetic ketoacidosis small respirations bradycardia with shallow breathing severe hypertension with slow respirations absence of dehydration question number 6 कीटोएसिडोसिस कंडीशन रे हमर जो स्मॉल रेस्पिरेशंस जो डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग पैटर्न्स एडा को हमको फॉलो करिया दरकार स्मॉल रेस्पिरेशंस ए जिंसोडा ए फाइंडिंग दा सॉरी ए फाइंडिंग दा हमर देखा जाउची हैला डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग हे गला क्वेश्चन नंबर ए हे गला क्वेश्चन नंबर 6 हे गला ऑप्शन नंबर ए a patient with type 2 diabetes is prescribed metformin. Which finding requires the nurse to exercise particular caution before continuing the therapy? Mild hunger, normal renal function, significant renal impairment, controlled blood glucose. Question number 7. मेटमॉर्फिन जोड़ा दिया जाउची मेटमॉर्फिन हमर किडनी द्वारा क्लियर हे जाउची मेटफॉर्मिन दा क्लियर्ड बाय किडनीज ठीक अछि तो इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रीनल इंपेयरमेंट ए ड्रग ता हमर जदी बॉडी रे एक्युमुलेट हे जाउची ताहाले गोटे रेयर कंडीशन दा किंतु हमर अल्टीमेटली लैक्टिक एसिडोसिस मध्ये क्रिएट करि परिबो हला लैक्टिक एसिडोसिस मध्ये कंडीशन दा क्रिएट करि परिबो जदी एटा हमर को हला ना एक्युमुलेट हेबा आरंभ हे गेला ऑल्दो इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन हला ऑल्दो वेरी रेयर कंडीशन किंतु ए जिंसटा मध्ये हमर देखा जाउची हां yes question number 7 कौन करियो हमें
C, yes, significant renal impairment. Next, a patient with diabetes reports numbness and burning sensations in both feet. Which complication should the nurse suspect? Diabetic nephropathy, diabetic peripheral neuropathy, diabetic retinopathy, diabetic ketoacidosis. 7 डाला C. Yes, it will be better समस्त जदि ना नंबर करी करिवो हला ए हबनी बीर ए नाही विक्टर सतपथी हाँ सी हबो करेक्ट आंसर रीनल इम्पेयरमेंट को हमर देखाउ छी ना आगो से कंडीशन टाको हमर सेटरेट करा जिबा दरकार yes 7 डाला C क्वेश्चन नंबर 8 करो it is diabetic peripheral neuropathy question number 8 है option number B correct answer question number 8 option number B is the correct answer next question number 9 which assessment is most important for early detection of the diabetic foot complications assessment of the peripheral sensation and skin integrity measurement of the abdominal girth assessment of the bowel sounds only measurement of the pupil size question number 9 मोनोफिलामेंट टेस्ट द्वारा आमे कोन करछे मोनोफिलामेंट टेस्ट द्वारा we are assessing the peripheral sensation and the skin integrity particularly by monofilament test hala next a patient with diabetes has persistent microalbuminuria which complication is in the, which complication is this finding most suggestive of diabetic retinopathy, diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, diabetic ketoacidosis? माइक्रो जो माइक्रोअल्बुमिनुरिया माने कौन जे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स are leaking into the urine हला तो ए कंडीशन जो हमर देखा जाउची ए कंडीशन देखा जाउची एडा गोटे नेफ्रोपैथी किडनी डैमेज रो कंडीशन दा डायबिटिक नेफ्रोपैथी होची आंसर करेक्ट हला सी यस सुमित्रा लक्ष्मी सुभस्मिता निहारिका प्रार्थना नेक्स्ट which insulin is generally considered a long acting basal insulin regular insulin insulin glargine insulin lispro insulin aspart already हमें आ ऊपर क्वेश्चंस करि सारचे है ना already क्वेश्चंस करि सारचे तो एडा it would be easier question number 11 question number 11 it is insulin glargine है it is insulin glargine next जिबा question yes sorry next question so a patient taking insulin develops sweating tremors palpitation and confusion which condition should the nurse suspect hyperglycemia diabetic ketoacidosis hypoglycemia hyperosmolar state it is hypoglycemia Junu yes good morning it is hypoglycemia means blood glucose level is lowered ठीक अछि yes hypoglycemia C hab harupiya next question number which instruction is most appropriate regarding the insulin injection sites
Repeatedly use the same exact site to improve the absorption. Rotate injection site systematically. Massage the site vigorously after administration. Inject the insulin only into the deltoid muscles. Only into the deltoid muscles. It is rotate the injection sites systematically. है massage तो जमा भी करिया कथा नहीं गोटे जगह ही बारंबार इंजेक्शन देबड़ा it is also not a wise thing to do है आ केवल जे डेल्टॉइड मसल रे दिया जे सेमिति तो किछि नहीं. Next question number 14. A patient with diabetes is prescribed NPH insulin. Which characteristic is associated with this insulin? It is an intermediate acting insulin. It has no peak activity. It is administered only intravenously. It has an immediate onset of an extremely short duration. Yes. Question number 14. Yes. 14 दा है A. 14 दा A जोड़ा हबा हमारा question number A. It is an intermediate acting insulin. NPH रा full form कोना? NPH रा full form होची neutral protamine hagedon. है ना जोड़ा रो की distinct peak activity होची वो 4 ରୁ 12 घंटा भितरे है ना. It is an intermediate acting insulin. It has a distinctive peak activity, usually 4 to 12 hours है ना. usually 4 to 12 hours. अब जदि तार फुल फॉर्म देखिबा NPH र फुल फॉर्म कोन? न्यूट्रल प्रोटामाइन एगिड्रॉन. Next, a patient with diabetes is ill with fever and vomiting. Which nursing instruction is most appropriate regarding the diabetes management? Stop insulin automatically until the patient resumes normal meals. Monitor the blood glucose more frequently and follow the prescribed 6-day plan. Avoid fluid intake. Consume only high-fat foods. Consume only high-fat foods. कौन करेगा? We need to monitor the blood glucose more frequently and allow the follow up माने prescribed 6-day plan जो अनुसार हमर करा जाउची से अनुसार हमको follow up करिया दरकार. ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करिया दरकार. जति हमर इल अछि फीवर और वोमिटिंग सहित डायबिटीज जति एसोसिएटेड डिग्री अछि ताले ब्लड ग्लूकोज लेवल ता मेजर हमर इंपैक्ट पकेबा हमर बॉडी रो ओवरऑल हेल्थ ऊपर. तो वी नीड टू मॉनिटर इट रेगुलरली. नेक्स्ट, which finding is in a patient with diabetes requires urgent attention because it may indicate severe hypoglycemia, mild thirst, increased urination, altered consciousness, dry skin. It is altered consciousness. Altered consciousness agents already dekha jauchi. Question number 17. A patient with DKA has deep, rapid respirations. What is the physiological purpose of this respiratory pattern? To increase the carbon dioxide retention, to compensate for metabolic acidosis by eliminating the carbon dioxide, to reduce the oxygen uptake, to increase the bicarbonate production in the lungs. Question number 17. Question number 17. Kona? To compensate for the metabolic acidosis by eliminating the carbon dioxide. एटा होचे हमरो गोटे डीके पेशेंट भितरे हमें ए जिंसोटा हमें इनकॉर्पोरेट करियो चेष्टा करी हैला. नेक्स्ट, which statement regarding the HbA1c is correct? It reflects the blood glucose control over approximately the previous 2-3 months. It measures only the current fasting blood glucose level. It is unaffected by the red blood cell lifespan. It directly measures the urinary glucose excretion. Urinary glucose excretion.
तो कौन करूची it reflects the blood glucose control over the approximately previous 2-3 months आ एटा हमर जो HbA1c होची एटा होची ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन दा जोटा कि हमर एवरेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बाउंड टू द रेड ब्लड सेल्स एटा को मेजर करची एटा होची ग्लाइकेटेड hemoglobin. It measures the average amount of glucose bound to the red blood cells है ना जोटा कि होची HbA1c है ना प्रणाम प्रणाम सनातन प्रणाम Next, question number 19. A patient with diabetes develop a foot ulcer. Which nursing intervention is most appropriate? Encourage walking barefoot to improve the circulation. Apply tight compression without vascular assessment. Perform regular foot assessment and reduce the pressure on the affected area. Soak the foot in a very hot water daily. Soak the foot in a very hot water daily. तो डायबिटिक फुट अल्सर्स जो होची सेरा हमर डिलिजेंटली हमर जदी हमको मॉनिटर करियो पड़िबो सो दैट से इन्फेक्शन न हो जाओ वर्सन न हो जाओ हैला प्रेशर को रिड्यूस करियो पड़िबो तो सेही जगह रे हमें कोन करि परिबा सेही जगह रे वी नीड टू परफॉर्म रेगुलर फुट असेसमेंट एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया से जगह को हमको अफेक्ट बा माने प्रेशर पकेया कथा नहीं अधिका हैला आ आल्सो हमें what we can do is we should be regularly assessing the foot health हैला फुट हेल्थ को रेगुलरली असेस मथे करिवा दरकार करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 डन क्वेश्चन नंबर 19 डन चलो एबे क्वेश्चन नंबर 20 A patient with HHS is admitted with severe dehydration and altered mental status. Which feature is typically prominent in the HHS? Severe hyperglycemia with marked hyperosmolality, severe ketosis as the defining feature, profound hypoglycemia, and respiratory alkalosis as the primary abnormality. Yes, question number 20. It is severe hyperglycemia with marked hyperosmolality है ना hyperosmolar hyperglycemic state बोली एटा को कहा जाउची ना hyperosmolar hyperglycemic state बोली एटा को कहा जाउची तो ए कंडीशन में hyperglycemia और hyperosmolality हमर रेडी देखा जिवो हैला 20 डाव है ए लक्ष्मी yes. Next question answer 21. Which patient is at a greatest risk for developing the hypoglycemia? A patient taking insulin who skips a planned meal, a patient with mild hyperlipidemia, a patient consuming a balanced meal with prescribed insulin, a patient with controlled blood glucose and regular meals. जदि प्लान मील जदि तार स्किप हो जाउछ ऑलरेडी इंसुलिन होछ गोटा हमर हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ता जोटा कि हमर बॉडी रे ब्लड रो ग्लूकोज लेवल को कम करूची तो बॉडी रे ब्लड रो ग्लूकोज लेवल को कम करला बेलु को जदि हमर जो मील ता नेबा कथा जोड़ा कि होछ हमर गोटे कार्बोहाइड्रेट रो सोर्स ता से सोर्स ता जदि हमें मिस करछे ताहले ब्लड रो ग्लूकोज लेवल ता ब्लड रे ग्लूकोज रो लेवल ता सिवियरली लो हो जाउची जोटा कि हमर सिवियर इंपैक्ट पके परिबो बॉडी ऊपर हैला हाइपोग्लाइसेमिया very low blood glucose level कर दे परिबो बॉडी रे ऑलरेडी पूरो इंसुलिन नोची जे ग्लूकोज लेवल कमियार अछि बोली एपटे हमर जो ऑलरेडी जो जिंसटा हमर कंज्यूम करिया दरकार जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ता हम कंज्यूम करिया दरकार से कार्बोहाइड्रेट सोर्स ता जदि हमर कंज्यूम न होची से जगह रे हमर हाइपोग्लाइसेमिया सिचुएशन अराइज हे परिबो एंड इट इज अ वेरी सिवियर सिचुएशन हैला blood glucose कमी जबो बॉडी रे a patient is learning insulin self administration which practice is safest insulin निजे निजे देबार सिखुची सी तो reuse the needle indefinitely if they appear clean verify the insulin type and dose before the administration
store the insulin in direct sunlight, shake all insulin preparation vigorously before every injection. Shaking to amara empty vigorous shaking is not allowed. Store karibo direct sunlight re not allowed. Hela reuse insulin, it is definitely not allowed on the side of hygiene. Now sabu concentrate dekhiya gale we should not be reusing the needles. Hela even if they appear clean, we should not be reusing the needles. So it option number B है correct answer कि insulin रो type को insulin नौचो आउ को mode रे नौचो को जगह रे नौचो आउ केमिति नौचो सब जिंस को properly administer करिगी properly analyze करिगी properly assess करिगी तापर जाके insulin को administer करबा कथा. Next answer question number 23. Which chronic complication of the diabetes is most directly associated with the damage to small retinal blood vessels? Diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, peripheral arterial disease, diabetic gastroparesis. Diabetic gastroparesis. It is retina word asila mane retina of the eye कथा आसुची. तो diabetic retinopathy कौन डा गोटे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन डा जोटा की डायबिटीज रे एसोसिएटेड हेगिरे हमर स्मॉल ब्लड वेसल को माने रेटिना रो स्मॉल ब्लड वेसल को हमर डैमेज कर दोछि हैला. इट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी. एडर कोन होछि ना स्मॉल रेटिनल ब्लड वेसल्स आर डैमेज. केमिति डैमेज हो जाउछि डायबिटीज सहित हमर एसोसिएट हेगिरे हमर ई जिंसरा देखा जाउछि एटा हमर रेटिना सहित एसोसिएटेड अछि जेतु इट इज रेटिनोपैथी. डायरेक्ट क्वेश्चन. Question number 24. A patient with diabetes has delayed gastric emptying, early satiety, nausea, and fluctuating blood glucose levels. Which complication should the nurse suspect? Diabetic gastroparesis, diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic ketoacidosis. এটা যেহেতু আমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্রাক্টর ইনফেকশন বা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্রাক্টর প্রবলেম গুড়াক দেখছি তার মানে এগুড়াক সব আমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্রাক্টর প্রবলেম রে ডায়াবেটিক গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস জিনিসটাকে হি বুঝাইব हैला. डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस जिंसटा को बुझौची. क्वेश्चन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 24 है ऑप्शन नंबर ए. 25. A patient with diabetes develops severe hypoglycemia but is unconscious and unable to swallow. Which intervention is inappropriate? कोड़ा भूल कोड़ा करिया कथा नुहे सेटा को पचारची. Administering IV dextrose when IV access is available, administering glucagon when appropriate and available, giving glucose gel or juice orally, maintaining the airway safety and monitoring the vital functions. Question number 25. Question number 25. Already कौन होची तार severe hypoglycemia तो अच्छी ता संगे he is unable to swallow से करि पारुनी तो को भी जिंस हमको orally देबाडा it is not preferable, it is very inappropriate of them हैला. ए जिंसटा हमर inappropriate जदी किए गोटे इंडिविजुअल अनकॉन्शियस अछि ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिया सिचुएशन अछि ता माने ताकू नियाती भाबरे ताकू माने ट्रीटमेंट ता अर्जेंट ट्रीटमेंट ता दरकार किंतु the individual is unable to swallow तो से केस रे ग्लूकोज बा कोनसी जेल की कोनसी जूस की कोनसे पानी वाणी एबा सब हमको ओरल ट्रीटमेंट देबा कथा नुहे. Next, a patient with a diabetes is prescribed insulin and is also taking a beta blocker. Which assessment finding may be particularly important because beta blockers can mask some symptoms of hypoglycemia? Excessive thirst, tachycardia, sweating and hunger, altered level of consciousness. 26. हाइपोग्लाइसेमिया हमर फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पांस को से हमर जनरेट करछि हैला. हाइपोग्लाइसेमिया जते बेले होछि जो कंडीशन ता को कि हमें कोचे कोन ना लोअरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल ए कंडीशन रे हमर एड्रेनालिन सिक्रेशन हो जाउछि. एड्रेनालिन ता कोन एडा होछि हमर इमरजेंसी हार्मोन ना emergency hormone da fight flight and fright response. ये हमरो एक्टिवेट हो जाउची तो ये एक्टिवेट हो जाउची बोली कहले से कंडीशन रे हमर हार्ट बीट बढ़ जाउची हैला. हार्ट बीट बढ़ जाउची, पाल्पिटेशंस बढ़ जाउची, इंक्रीज्ड हार्ट बीट and palpitations, increased heart rate and palpitations. आउ एडा हमर अफेक्ट कोन करूची एडा हमर अफेक्ट कोन पकोची ना हमर हार्ट रेट ऊपर अफेक्ट पकोची एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमर हार्ट बीट ता मध्ये हमर बढ़ुची जेतले बढ़ुची हार्ट बीट ता ए कंडीशन ता को हमर टैकीकार्डिया बोली
कुआ जाउची एडा को हमर टैकीकार्डिया बोली कुआ जाउची तो ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि डी डी कोन कहलनी कि अरे सी डी कोन कहलनी बी हबो क्यों सी डी कोन कहलनी जे a patient with diabetes has autonomic neuropathy which gastrointestinal manifestation is most likely gastroparesis acute appendicitis peptic ulcer perforation intestinal obstruction in every case question number 27 it is gastroparesis है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी अछि जोटा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन भितर ए सबुडा भितर हमर जोटा सबुड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सहित एसोसिएट होछि सेटा होछि गैस्ट्रोपैरेसिस नेक्स्ट a patient with diabetic neuropathy report reduced sensation in both feet which instruction is most appropriate walk barefoot indoors to strengthen the feet inspect the feet daily including between the toes apply a heating pad for the feet every night trim corns with a sharp blade at home कौन हम we need to inspect the feet daily including between the toes सब जगह रे प्रॉपर इंस्पेक्शन करबा दरकार जेहेतु हमर बर्निंग सेंसेशन डायबिटीज द्वारा हेची तो हमर किछि भी इन्फेक्शन हमर पर्टिकुलरली हेई पारे हैला तो सेति में बोली डेली बेसिस रे हमको सी जगहटा को इंस्पेक्ट करिया दरकार प्रतिटी कॉर्नर्स प्रतिटी पॉइंट्स सब देखि कि हमको इंस्पेक्ट करिया दरकार डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशंस रे which finding is most suggestive of the diabetic autonomic neuropathy affecting the cardiovascular system persistent bradycardia during the sleep only orthostatic hypotension increased visual acuity increased bowel sounds 29 orthostatic hypotension increased visual acuity कौन हम diabetic autonomic system ही affect करछि कागो ना हमर cardiovascular system को it is orthostatic hypotension हैला orthostatic hypotension एरा रे कोन होची ना कार्डियोवास्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जोड़ा देखैछि सेरा हमर ब्लड प्रेशर रो रेगुलेशन को डिस्टर्ब करछि जोटा कि नर्व कोन करछि ब्लड वेसल्स द्वारा हमर प्रॉपर्ली माने कंस्ट्रक्शन हे परनी हैला ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन हे परनी आ ए जो कंडीशन ना कंस्ट्रक्शन न हे परिबा जो ब्लड प्रेशर को से लोअर करछि आ एरा हमर ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन को देखौछि हैला आ पेशेंट ऑफन फील डिजी आउ हमर कोनोसी प्रकार लाइट हेडेड स्टैंडिंग अप पोजीशन हे परना हैला डिजी हमर फील करबो पेशेंट नेक्स्ट a patient with diabetes develop orthostatic hypotension which nursing intervention is the most appropriate orthostatic hypotension कथा हमें जोड़ा बे देखिले हैला कंस्ट्रक्शन हे परनी जेहेतु हाइपोटेंशन देखा जाउची तो ए केस रे कोन करिया दरकार जेहेतु हमर ए कंडीशन रे yes bp decrease during standing yes तो डीजी उठू उठू मुंडो बुलेबा आरंभ हो जेबो हैला मुंडो झाई झाई मारला भले लागि से कंडीशन दा होची प्रतीक्षा yes तो ए कंडीशन रे हमर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जेहेतु डिजीनेस देखा जाउची डिजीनेस देखा जाउची तो वी नीड टू असेस फॉर द डिजीनेस एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू राइज ग्रेजुअली धीरे धीरे उठिबा को कुआ जेबो हैला धीरे धीरे हमर जहाँ भी एक्टिविटी करिया को कुआ जेबो हैला धीरे धीरे बसिथिबो बोली कहले हटात एमती न उठी जाई धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली करबा दरकार Next question number 31. A patient with diabetic nephropathy is being monitored for progression of the renal disease. Which laboratory parameter is particularly useful? Urinary albumin excretion, serum amylase, serum bilirubin, bleeding time. Diabetic nephropathy कहिछि renal disease or progression को देखिया पे मॉनिटर करिया पे बोली तो से केस रे हमें कोन कहछे ना यूरिनरी अल्बुमिन रो एक्सक्रीशन को हमें पर्टिकुलरली से पैरामीटर टा पर्टिकुलरली यूजफुल हो जाउची हैला काहे ना प्रोटीन्स उडा को जनरली हमरा लीक करे यूरिन रु हैला प्रोटीन्स लीक करे यूरिन रु तो सेठी हमरा माइक्रो अल्बुमिनुरिया ही बा कंडीशन टा मध्ये हमरा देखा जाय परबो प्रोटीन लीक इन द यूरिन तो ए जो पैरामीटर टा यूजफुल टू assess this condition next a patient with diabetes has persistent hyperglycemia despite taking prescribed medications which factors should the nurse assess first medication adherence and administration technique hair growth pattern pupil size only daily sleeping position jette medicine खाइले मध्य hyperglycemia situation ता तार कमुनी hyperglycemia माने increased blood sugar level
तो ए केस रे जदि मेडिसिन खाइगिरी मते जदि न कमुची बोली कहले ताले से मेडिसिन रे किछि प्रॉब्लम अछि या फिर तार डोजेज रे या फिर तार एडमिनिस्ट्रेशन रो रूट रे या फिर तार एडमिनिस्ट्रेशन रो टेक्निक रे तो से सब जिंस को एसेस करिया दरकार मेडिकेशन एडहेरेंस केमिति निया जाउची आ केमिति तार एडमिनिस्टर करा जाउची से टेक्निक टाको मध्ये फॉलो अप करिया दरकार जहा द्वारा कि आमी से कंडीशन टाको एसेस करि परिबा आ अकॉर्डिंगली ताको ट्रीट करि परिबा नेक्स्ट a patient taking insulin develops lipodystrophy at injection sites. Which nursing instruction is most appropriate? Continue injecting into the same area, rotate the injection site systematically, massage the area vigorously before the injection, inject the insulin into the scar tissues. Into the scar tissues. Lipodystrophy गोटे कौन ना गोटे abnormal condition डा बा जोड़ा रे की accumulation हे जाउची fat tissue रो या फिर तो loss हे जाउची fat tissue रो काहेंगी ना काहेंगी ना सेठी रिपीटेड इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाउची सेही जगह रे हैला तो लिपोडिस्ट्रोफी कोन ना आइदर accumulation of fat tissues or loss of fat tissues in a confined area due to repeated insulin administration at the same site एडा होचे हमर कोन तो आकु ट्रीट करिया पे हमें कोन करि परिबा रोटेट करि परिबा गोटे जगह हमें चेंज करी इंजेक्शन दिया जबा दरकार हैला कंटिन्यू सेही जगह रे करबो बोली कहली लिपोडिस्ट्रोफी कंडीशन आउरी बढ़िबो मसाज करबोनी से जगह को कि कोन से हमर स्कार टिश्यू एडा को सब इंजेक्ट करी इंसुलिन सब जिंस करिया कथा नै वी नीड टू रोटेट द इंजेक्शन साइट systematically next which instruction is most appropriate for a patient using an insulin pen share the pen with family member if the needle is changed use a new needle according to recommended practice and never share the device store the pen permanently in direct sunlight use the same needle repeatedly until it becomes visibly bent hela jae use karibo ki seta kebe nuhe pen direct sunlight रे केबे स्टोर करा जेबा कथा नुहे फैमिली सहित कि कहा भी सहित सेट चेंज शेयर करिया कथा नुहे इवन द नीडल्स आर बी चेंज्ड हैला हमें कोन करबा नुवा नीडल यूज करतबा प्रतिटी थरो जेते थरो भी हमर इंसुलिन रो एडमिनिस्ट्रेशन होउची सेते थरो हमें बारंबार नुवा नीडल्स मध्ये हमें यूज करबा हैना next question number 35 a patient with diabetes is scheduled for surgery which factor is particularly important in the perioperative period complete discontinuation of the glucose monitoring careful monitoring and adjustment of the glucose lowering therapy encouraging the unrestricted oral intake immediately before the anesthesia avoiding all IV fluids question number 35 question number 35 we need to carefully monitor the adjustment of the glucose lowering therapy हैला careful monitoring and adjustment of the glucose lowering therapy this is the best thing that we can do in the perioperative period yes next question number 36 a hospitalized patient with diabetes is receiving corticosteroid which effect should the nurse anticipate increased risk of hyperglycemia persistent severe hypoglycemia in all cases complete suppression of insulin requirements permanent normalization of the HbA1c question number 36 corticosteroid जदि दिया जाउची ता माने सेटा हमर ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करची त ग्लूकोज रो प्रोडक्शन को मध्ये हमर बढ़ेबो लिवर रे हैला जहा द्वारा कि इंसुलिन रो सेंसिटिविटी बॉडी रे हमर देखा जिवो त ए जगह रे दे हैव द इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया जेहेतु corticosteroid दिया जाउची ता माने ग्लूकोज लेवल हमर बढ़ेबो किमिति बढ़ेबो लिवर रो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करिगिरी तार सिंपलर फॉर्म रे से हमर फॉर्म करबो जोडा को हमर ग्लूकोज बोली कहया गला आ सेडा हमर ब्लड रूट रे बढ़ला बोली कहले एडा हमर हाइपर ग्लाइसेमिया सिचुएशन को गिव राइज करछ हैला सो वी नीड दिस देयर इज द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इन दिस कंडीशन नेक्स्ट which medication class can increase the risk of hypoglycemia when used with insulin or insulin secretagogues sulfonyl urease antacids proton pump inhibitors antihistamines question number 37 एडा को हमें कोन करछे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया को मेडिकेशन क्लास ता हमें यूज करि परिबा जति हाइपोग्लाइसेमिया हमर देखा जाउछ सल्फोनाइल यूरेज यूज करि परिबा काहे कि ना या हमर कोन करछि इट स्टिमुलेट्स
it stimulates the pancreatic beta cells to release more insulin है to release more insulin तो सहित आम कौन कहे तो ये एपटे आमर बॉडी रु पैनक्रियास रु इंसुलिन आमर डिराइव होची ता सहित एक्सटर्नल इंसुलिन आम इनटेक करी एक्सटर्नल इंसुलिन इनटेक करी आम कंडीशन टाको ये कर परिबा हैला कंडीशन को प्रॉब्लम कर परिबा नेक्स्ट A patient taking a sulfonylurea develops sweating, confusion, and tremors. Which complication should the nurse suspect? Hypernatremia, hypoglycemia, hypercalcemia, na metabolic alkalosis. जेहेतु आमर सल्फोनाइल्यूरियस कथा कह जाइए तामाने एटा हमर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को ही से देखिबो हैला से हमर इंसुलिन रो सेक्रेशन दा बढ़ौची पैनक्रियास रे बीटा पैनक्रियाटिक रिसेप्टर्स को हमर से एक्टिवेट करी गिरी पैनक्रियाटिक बीटा सेल को एक्टिवेट करची आ इंसुलिन रो क्वांटिटी बढ़ौची तो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन ना हमर अधिका देखा छै जगह Question number 39. Which instruction is particularly important for a patient taking metformin who is scheduled for a contrast enhanced imaging procedure? Ignore the renal function completely. Inform the healthcare team because metformin management may need adjustment around the contrast exposure. Double the metformin dose before the procedure. Take the metformin with alcohol to prevent the nausea. कौन करिवा? मेटमॉर्फिन जोड़ा कि हमर जदी टेम्परेली डिसकंटिन्यू करा जेबा दरकार कोनसे भी प्रोसीजर होची बोली कहले हला तो से केस रे काहे की करा जेबा दरकार काहे की ना हमर सी हमर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमर लैक्टिक एसिडोसिस को मध्ये सी हमर लीड कर पारे लैक्टिक एसिडोसिस सिचुएशन को मध्ये लीड कर पारे तो से केस रे हमर जदी मेटमॉर्फिन निया जाउची ताहाले वी नीड टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर टीम बिकॉज़ मेटमॉर्फिन मैनेजमेंट एडजस्टमेंट दरकार परबो ताको हला कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर टाइम रे ताको एडजस्टमेंट दरकार ठीक Yes, Rasmita, Pratiksha, option number B here will be the correct answer. Next question number 39 here, 40. A patient with diabetes reports recurrent episodes of the hypoglycemia occurring several hours after the meal. Which medication related cause should the nurse consider? Excess insulin or insulin segregate effect, insufficient vitamin C intake, excessive calcium supplementation alone, reduced dietary fiber alone. Yes, एटा को excess insulin और insulin secretagogue effect आ insulin secretagogue effect के देखौची sulfonylureas हैला next question number 41 a patient with diabetes develop persistent nausea early satiety and unpredictable postprandial glucose level which nursing assessment is most relevant assessment for delayed gastric emptying assessment for acute hearing loss assessment for increased bone density assessment for hyperthyroidism only गैस्ट्रोपैरेसिस कथा कह जाइछि postprandial nausea satiety postprandial glucose level ये सब कथा कह जाइछि ता माने एरा सब हमर gastrointestinal tract सहित associated हेगिरी अछि that means एरा हमर assessment for the delayed gastric emptying ए कंडीशन ता हमको assess करिया दरकार आ ए कंडीशन ता हमर most relevant हि जाउछि एरा हमर most relevant हि जाउछि which finding is most suggestive of the diabetic ketoacidosis associated dehydration bounding pulse and moist mucous membranes, hypotension with dry mucous membranes, increased urine output with normal hydration status, peripheral edema with hypertension. Peripheral edema with hypertension. Next, question number 42. कौन होगा? Hypotension with dry mucous membrane. जोड़ा कि हमर diabetic ketoacidosis condition रे excessive urination हेबा जोगु एटा देखा जाउछि हैला hypotension with dry mucous membranes. Hypotension with dry mucous membranes. C, B is the correct answer. Yes, Haribol, Pratiksha, Chandan, Rasmita, Roshni, Sudipta, Biharika. Yes. Question number 43. A patient with DKA, diabetic ketoacidosis, has a blood glucose level that begins to fall during the treatment, but ketosis persists. Why may dextrose be added to the IV fluid? To allow the insulin therapy to continue while preventing the excessive hypoglycemia, to completely stop the insulin administration, to increase the ketone production, to worsen the dehydration intentionally. Question number 43. Insulin जेहेतु हमर दरकार पड़छि ketone को क्लियर करिया पई बोली आ ब्रेकडाउन ऑफ फैट को स्टॉप करिया पई बोली हैला तो डेक्स्ट्रोज हमर ऐड करा जाउछि हैला डेक्स्ट्रोज ऐड करा जाउछि
आउ ता संगे जदि डेक्सट्रोज ऐड होची ताहले हमर इंसुलिन टा एडमिनिस्टर सेफली होची आउ कोनोसी प्रकार हमर लो ब्लड शुगर कंडीशन हमर देखा जाउ नै हैला लो ब्लड शुगर कंडीशन देखा जाउ नहीं तो डेक्सट्रोज हमर बारंबार दिया जाउची to allow the insulin therapy to continue while preventing the excessive hypoglycemia condition. Dextrose can be given. Next question number 44. Which acid base abnormality is expected in diabetic ketoacidosis? Respiratory alkalosis as the primary disorder, metabolic acidosis with an increased anion gap, metabolic alkalosis with decreased ketones, respiratory acidosis without metabolic involvement. Without metabolic involvement. Question number 44. Which is metabolic acidosis with increased anion gap. Metabolic acidosis with increased anion gap. Next, a patient with diabetes develop a non-healing wound on the foot. Which combination of factors can contribute to the permanent healing? Hyperglycemia, neuropathy, and impaired circulation, increased tissue oxygenation and normal immunity, increased insulin sensitivity and improved perfusion, excessive collagen production only. Diabetes अछि wound टा heal होनी तार माडटा तार सुखुनी तो से केस रे गोडरे माडटा बाजी सेटा तार सुखुनी तो एटा को फैक्टर टा से कंडीशन टा को हमर impaired healing को कंट्रीब्यूट करूची impaired healing को कंट्रीब्यूट करूची it is hyperglycemia blood sugar level जदि बढ़ी ची न्यूरोपैथी मध्ये ता सहित associated हेगी अछि and circulation मध्ये हमर impairment देखौची ताले से कंडीशन रे हमर कोनोसी भी घाट सुखीबाटा प्रॉब्लम होची सेति में बोली डायबिटीज हेले खुआ जाय जे जदि माडा माडा हुए ताले एते जल्दी हमर रिकवर हुएनी हैला because of the hyperglycemia state yes good afternoon cartoon. Next question number 46. Which foot care practice should the nurse discourage in a patient with diabetic neuropathy? Inspecting the feet daily, wearing properly fitting footwear, walking barefoot, keeping the feet clean and dry. को जिनसटा को हमको डिस्करेज करिया कथा या फिर मना करिया कथा जो माने को डायबिटिक न्यूरोपैथी जो माने सफर करूचंती they should not be walking barefoot हैला should not be walking barefoot because since there are already infections in the body infection हे परिबो बॉडी को आउ हमर severe impact मते पके परिबो तो से जिंस को हम प्रिवेंट करिया पई बोली we need to stop avoiding walking barefoot हैला we need to stop or avoid walking barefoot. Next, a patient with diabetes has visual impairment causing by chronic microvascular retinal damage. Which nursing intervention is most appropriate? Encourage regular ophthalmic evaluation, advise the patient to discontinue glucose monitoring, recommend reading in very dim light, restrict all physical activity permanently. Question number 47. जदि visual impairment अछि ता माने ophthalmic evaluation is necessary regular basis रे ophthalmic हमर आखिरो जांच करिबाडा necessary. Question number 48. A patient with diabetes develop chronic kidney disease. Which dietary modification may become necessary depending on the renal function and laboratory findings? Individualized control of sodium, protein, potassium, and fluid intake, unlimited sodium intake, mandatory high protein intake for every patient, complete elimination of the all carbohydrates. Complete elimination of all carbohydrates. कौन होगा question number 48? Chronic kidney disease अछि diabetes अछि dietary modification कौन करिबा individualized control of sodium protein potassium fluid intake हैला सब जिंसर individualized control हमर रखिया दरकार individual level रे देखिया दरकार और person to person आर requirement हमर body requirement मध्ये अलग प्रकार है तो ए जिंस को मध्ये हमको टिके ध्यान देबा दरकार. Next question number 49. Question number 49. A patient with diabetes has a fasting blood glucose within the target range but repeatedly develop elevated glucose levels after meals. Which measurement would be particularly useful for evaluating this pattern? Postprandial blood glucose, serum calcium, bleeding time, urine ketone alone. Urine ketone alone. It is postprandial blood glucose माने after meal. After meal. ठीक अछि meal परे हमर देखिबा दरकार सेटा. Next, a patient with type 1 diabetes. A patient with type 1 diabetes asks why insulin must be administered regularly even when blood glucose appears controlled. Which explanation is the most appropriate?
Which explanation is most appropriate? Insulin is required to replace the body's deficient endogenous insulin and maintain the glucose regulation. Insulin permanently cures the type 1 diabetes. Insulin prevents all infections. Insulin is required only to increase the appetite. Only to increase the appetite. तो आमर कौन एक्सप्लेनेशन आमे देबा कि इवन इफ आर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रही गले मध्य हैला why do we need to take the insulin repeatedly regularly? Because insulin is required to replace the body's deficient endogenous insulin. हैला बॉडी हमर सफिशिएंटली इंसुलिन प्रोड्यूस करि पारनी बोली हमें बाहर एक्सटर्नली इंसुलिन नोचे बाहर एक्सटर्नली इंसुलिन नोचे बोली से कंडीशन हमर कंट्रोल्ड वे रे अछि हमें जदी बाहर इंसुलिन नबा बंद कर दबा ताले इट कैन वर्सन द सिचुएशन मोर हैला इट कैन वर्सन द सिचुएशन तो सेति पई बोली ग्लूकोज रेगुलेशन को मेंटेन करिया पई बोली वी नीड टू टेक इंसुलिन रेगुलरली we need to take insulin regularly. So with this, thank you so much everyone. आजर क्लास एतिके पई बोली थिला हैला आजर क्लास एतिके थिला आ गोटे मध्ये तम पई गोटे इंफॉर्मेशन तम पई गोटे शॉर्ट नोटिस हैला कोन ना तम मानक पई बोली गोटे ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखा जाईची ह्यूज प्राइस ड्रॉप इन द कोर्स फीस जोड़ा का हमर नर्सिंग ऑफिसर OSSSC नर्सिंग ऑफिसर पई बोली जो बैच अनाउंस हेतिला से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी आ तमु जदी पूरा आरंभ रो जहा जहा सब सेशन हेची से सब सेशंस रा रिकॉर्डिंग notes questions and everything will be provided आउ आज पई बोली हमर बहुत ही अधिक मात्रा रे प्राइस ड्रॉप देखा जाईची हैला ऑनलाइन मोड रे 999 हे जाईची जोड़ा कि प्रीवियसली 1499 थिला और ऑफलाइन मोड रे 4999 दा 299 रो 2999 हे जाईची हैला त माने पूरा अधा हे जाईची प्राइस ता तो मेक श्योर ए चांस रो ए जो ऑफर रो फुल फायदा तमे उठेबो बहुत ही कम टाइम बाकी रही गला एग्जाम टाइम बोली तुम प्रिपरेशन को भलो रखो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन जय जगन्नाथ समस्त।